Assalamu alaikum dear students, I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 19 of complex analysis. In this lecture we are going to start with zeros and then some hyperbolic functions and some identities in complex numbers. So we start with zeros. Now zeros of real or complex sine function occurs at integral multiple of pi. यहाँ पर दो चीज़ें बयान की गई हैं, एक है साइन फंक्शन के ज़ीरोज़ और दूसरे हैं कोसाइन फंक्शन के ज़ीरोज़। नाउ वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट रियल और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, साइन फंक्शंस के जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या होंगे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होंगे। मीन्स पाई के जितने भी मल्टीपल्स आ रहे होंगे, इंटीजर मल्टीपल्स आ रहे होंगे, इंटीजर्स में भी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पर आपको क्या देगा, साइन 0 देगा। एंड देन zeros of real or complex cosine function occur at odd integer multiple of pi by 2. Now odd integer for sine integer multiple and for cos odd integer means 1 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, minus 1 minus 1 pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 5 pi by 2 ऑड इंटीजर मल्टीपल पे cos आपको 0 प्रोवाइड करेगा। सो ये हमारे पास ज़ीरोज़ हैं किसके, साइन फंक्शन के और कोसाइन फंक्शन के। नाउ ज़ीरो से मुराद होता क्या है, ज़ीरो से मुराद ज़ीरो इनपुट नहीं है, ज़ीरो से मुराद एन इनपुट ऑफ द फंक्शंस, एन इनपुट ऑफ द फंक्शंस फॉर विच आउटपुट इज ज़ीरो के किसी भी, जैसे यहाँ पर साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शंस की ऑल दोज इनपुट्स फॉर विच आउटपुट इज ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ दिस वन, ज़ीरो ऑफ कोसाइन फंक्शन हमारे पास कहलाता है। एंड देन इज ज़ीरो ऑफ कोसाइन फंक्शन, वो क्या होगा, all those inputs for which output of cosine function is 0 are called the zeros of cosine functions. Next, we move towards relation of hyperbolic and simple trigonometric function. Now, what are the relations between hyperbolic functions and simple trigonometric functions? Sine of z is equal to minus iota sine hyperbolic iota z. Cos of z is equal to cos of hyperbolic iota z. Sine of hyperbolic z is equal to minus iota sine of iota z, and cos hyperbolic z is equal to cos of iota z. Then is tan of iota z is equal to iota tan hyperbolic z. Sine hyperbolic minus z is equal to minus sine hyperbolic z, and cos hyperbolic minus z is equal to cos hyperbolic z. Then there are some identities in hyperbolic functions that are cos hyperbolic square z minus sine hyperbolic square z is equal to 1, and sine hyperbolic z1 plus minus z2 is equal to sine hyperbolic z1 cos hyperbolic z2 plus minus cos hyperbolic z1 sin hyperbolic z2। मीन्स यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वही एप्लीकेबल है। एंड फॉर cos, cos hyperbolic z1 plus minus z2 is equal to cos hyperbolic z1 into cos hyperbolic z2 plus minus sin hyperbolic z1 into sin hyperbolic z2. These are the identities. Now there are some remarks. In remark he is saying that if x belong to R, then cos hyperbolic x and sin hyperbolic x are not periodic. के हाइपरबॉलिक फंक्शन में अगर आपने इनपुट रियल नंबर दे दिया है
तो वो cos हाइपरबॉलिक x और sin हाइपरबॉलिक x पीरियोडिक नहीं होंगे। इफ z बिलोंग टू c, कि अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स इनपुट कर दिया है हाइपरबॉलिक फंक्शंस में, cos हाइपरबॉलिक z एंड sin हाइपरबॉलिक z आर पीरियोडिक, देन इफ x बिलोंग टू r, देन cos हाइपरबॉलिक x हैव नो जीरोस, कि अगर आप हाइपरबॉलिक में cos हाइपरबॉलिक में रियल नंबर इनपुट करेंगे तो देन cos हाइपरबॉलिक x हैज़ नो जीरोज, इसकी कोई भी जीरोज नहीं होगी। इट मीन्स कोई ऐसे इनपुट नहीं है जिस पर आउटपुट जीरो आ रहा हो। देन इफ x बिलोंग टू r, देन sin हाइपरबॉलिक z हैज सिंगल जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो, के sin हाइपरबॉलिक x, जब x आपके पास रियल हो तो वहां पर sin हाइपरबॉलिक x की सिर्फ एक ही ज़ीरो है। सो वी आर